Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I would be teaching you how to find the area of any object that you have in AutoCAD. Okay, area मालूम करना is important. Just to find out कि कितना आपका particular room हो या particular airport area हो या building area हो. How to find that मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी. So stay connected with me up till the very end. So let's get started with our class. So इसमें what I'm going to do is I'm going to just create a rectangle. Okay, एक simple rectangle बनाती हूँ मैं just to give you all the idea कि हमें area किस तरह से बनाना है. And I got this rectangle over here और इस rectangle का मुझे area भी चाहिए और perimeter भी चाहिए. ठीक है, तो इसका what I'm going to do is I have this measure tool that you see at the top over here. Okay, मैं ये measure tool click करूँगी. ठीक है, and under this category you have this option called area. ठीक है, मैं एरिया पे क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पर यू हैव लाइक सम स्पेसिफिक ऑप्शंस दैट ओपन्स अप नियर यू. इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट का मुझे एरिया निकालना है, राइट? सो आई एम गोना क्लिक द ऑब्जेक्ट ऑप्शन एंड आई एम गोना क्लिक द ऑब्जेक्ट जिसका एरिया मुझे निकालना है एंड देन मुझे यहाँ पर एरिया का ऑप्शन आ रहा है. आई एम गोना क्लिक ऑन दैट एरिया. अब मुझे एरिया निकालने के लिए आई हैव टू सेलेक्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. सो मैं यहाँ पर आई जस्ट प्लेस माय mouse on each and every end point. Okay, और इस तरह से coming to an end because every पूरा rectangle बन चुका है. Back to my first point and followed by the space bar. ठीक है, and that is going to give me the area of the rectangle, which is 19100.58. That's the area, and the perimeter is going to be 570.33. ठीक है, so simple. It was easy, right? अगर what if आपके पास एक अजीब सा shape है, so for example, ठीक है, I'm going to just make a random shape. ठीक है, एक मैंने एक रैंडम शेप बना लिया है. ओके, आई नीड टू मेक श्योर कि इसका एरिया निकालो. आई एम गोना डू द सेम मेजर के अंदर एरिया. आई एम गोना सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड देन एरिया निकालेंगे हम बाय सेलेक्टिंग ऑल द एंड पॉइंट्स. ठीक है, सारे एंड पॉइंट्स को आप यूज करते हुए इस तरह से या एंड देन followed by the space bar, and that is the area. यहाँ नीचे आप देख सकते हो that is the area of that particular shape and the perimeter of it. ठीक है, so इस तरह से you can actually find out the area of anything. अगर आप volume भी निकालना चाह रहे हैं तो इस तरह से you can actually find the volume as well. ठीक है, so I hope this video was pretty informative. So do like my video, share it with your friends and do subscribe my channel. अगर आपने दूसरे videos मेरे channel पे नहीं देखे हैं तो have created much more informative videos there too. आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा and it's going to be very helpful for you all. So up till then, take care and bye bye.